Acha, romantic poetry and romanticism is very important topic included in the English literature. So today's topic is about romantic poetry and what are the language used in romantic poetry and what are the contents of romantic poetry and what are the characteristics of romantic poetry. So all these topics are included in this video. You must watch this till to the end that you understand the basics of romantic age and romantic poetry. So today I will going to give a little touch to romanticism. That what is romanticism? First of all, a little request to you all of you that you should subscribe the channel Knowledge TV KTV and should press on the bell icon that you might notify with more important videos. So let's take a start from the romantic poetry. Okay, so first of all, you must know about Romanticism. That what was Romanticism? Actually, this age was started in English literature from 1798. ये 1978 से start होता है romantic जो इसको रोमानियात भी कहा जाता है. Actually 1978 से start होता है, ठीक है? Start होता है. Actually, it was against the new classicism. In new classicism, what were happens? They made some rules and regulation for poetry. That poetry should be under some consideration and some rules and regulation. उसने कुछ कवानीन बनाए थे कि उसके अंदर जिस तरह की क्लासिकल स्पेशली ग्रीक एंड लैटिन रोमन्स या इसके अलावा जो मुख्तलिफ क्लासिकल वर्क्स थी, ठीक है, तो न्यू क्लासिकल में उसको काफ़ी किया गया, ठीक है, और उसने फिर वो रूल्स अपनी पोइट्री या जो ड्रामास एक्सेट्रा लेके गई थी रोमांटिक स्पेशली न्यू क्लासिकल एज में, ठीक है, उसको काफ़ी किया था. स्पेशली Alexander Pope is well known, especially his comic epic, that is the Rape of the Lock is famous. They just copy the original epical story of John Milton, not John Milton, but that the Greek Eliots, Homers, etc. ठीक है, उनको काफी किया तो उसने कुछ रूल्स रेगुलेशन पोइट्री की बनाई कि इस रूल्स पे हम पोइट्री बनाएंगे. लेकिन रोमांटिक एज जब 1798 में स्टार्ट हो गया तो फिर उसने क्या कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन पोइट्री में नहीं चलती. इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द पोइट्री बिकॉज पोइट्री इज नॉट अंडर द रूल्स, because poetry is something spontaneous or flow, okay, especially recollected in tranquility. So this was the main topic of romanticism. Okay, so romanticism was actually they haven't any real regulation follow in their poetry. They are free from these things. Okay. अच्छा, अब आते हैं रोमांटिक पोइट्री के अंदर. रोमांटिक पोइट्री एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड व्हिच वाज पब्लिश्ड बाय एसटी कॉलेज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ. ओके, उसके दोनों कॉम्बिनेशन से एक वर्क लिखा है, उसको लिरिकल बैलेड भी कहा जाता है, ठीक है. तो इसी से रोमांटिक एज का आगाज होता है और रोमांटिक की पोइट्री स्टार्टेड होता है, ठीक है. ये स्पेशली लिखी गई थी 1798 में. इसके अलावा traditionally the romantic poetry is traditionally end up with the death of Walter Scott इसमें 1838 में. रोमांटिक एज का जो एज है ये बहुत शॉर्ट एज भी है, ठीक है, क्योंकि उसमें एज में जो यंग पोएट्स थे स्पेशली जॉन कीट थे या पीवी शिले था, ठीक है, इसके अलावा और भी वर्ड्सवर्थ था, तो वो बहुत यंग एज में क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई. तो इसी वजह से जो रोमांटिक पोइट्री था उसके जो जेन्युइन राइटर्स थी उसका डेथ होने की वजह से ये एज भी लिमिटेड रहा. 1838 को जो Walter Scott is, I think, is considered is the last romantic poet. After his death, the romantic poetry is end up. Okay, after that, Victorian stage started. Okay, so some consider poetry produced in Victorian, even modern eras to be romantic. Some critics also consider that in the Victorian periods and especially in the modern eras, the poetry which are written, they are also the germs of romanticism. Okay, germ not be but the characteristic of romanticisms are included in the Victorians and the modern periods. Okay, this was a trend. Actually, romanticism is not started from 1798, but if you look study the Chaucer works, medieval ages poetry, so there are romanticism out there, okay, but originally romanticism started from
1719, especially the publication of lyrical ballads. So what were the themes and what are the contents of lyrical ballads was the content of the poetry, that what type of content should be included in the poetry. पोट्री का जो कंटेंट होगा लिरिकल बैलेड में स्पेशली रोमांटिक पोट्री के बारे में जो लिखेगा उसमें कहा गया कि कंटेंट क्या होगा रोमांटिक पोट्री का. सेकंड, लैंग्वेज ऑफ पोट्री, किस टाइप के लैंग्वेज हम इंक्लूड करेंगे रोमांटिक पोट्री की, ठीक है. थर्ड नंबर पे द फीचर्स ऑफ द पोट्री, किस किस्म के फीचर्स की पोट्री हम we will include it in the romantic feature, and the definition of poetry. What are the definitions? So sample words what definition of poetry. That's poetry is a spontaneous overflow or full feeling which is recollected in tranquility. This was the definition of romantic poetry. Okay, so apart from this, if you see that definition of poetry, these are included in the lyrical ballads. Okay, so you okay, let's come to the content of romantic poetry. That what type of content should be included in the romantic poetry. Okay, so they choose some specific content that it should be included in the romantic poetry. The first one is the poet choose to relate, to describe incident and situation from common lives. ओके, जो इंसिडेंट डिस्कस की, जो इवेंट डिस्कस की गई थी रोमांटिक पोइट्री के अंदर, वो सब रिलेटेड है कॉमन लाइफ की अंदर, ठीक है. वो कोई ऐसे सुपर नेचुरल तो भी इंक्लूडेड है, लेकिन उन चीज़ों को नहीं डिस्कस की जो पास्ट में थी, लेकिन जो स्पेशली फास्ट एंड प्रेजेंट सिचुएशन आर द प्रेजेंट वाली कॉमन लाइफ, आम जिंदगी, आम आदमी की जिंदगी के बारे में रोमांटिक poetry लिखी गई थी. तो this was the first content of romantic poetry. The second is everything expressed implies the use of imaginations. Imagination का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की गई है romantic poetry के अंदर. And this was very important part romantic poetry. If you look on Wordsworth poetry, okay, जो especially the first B.C. Shelley के जो poems है या जॉन कीट्स की जो poem है, वो बहुत ज़्यादा imaginative in type से, बहुत ज़्यादा imagination का use किए, hyperbolic imaginations is used or used in their poems. We will discuss these poems inshallah in next video. Okay, low and rustic life is chosen. Low and rustic life is chosen, especially जो गांव वाले की होती है, या especially villagers life, rustic life, rural are not discussed, but especially the village life are discussed because villages are beautiful. There are flowers, there are what we call hills, etc. So this was the main content of what the romantic poetry. The fourth is poetry should discuss our ordinary things, आम सी चीज़ें. फॉर एग्जांपल फ्लावर्स है, क्लाउड्स है, ठीक है, इस तरह ग्रीनरी है. These things are discussed in what, in the romantic poetry. Especially these should be included in the romantic poetry because this was chosen as the content of romantic poetry. Language of poetry क्या होगी? Language of poetry. So selection of language rarely used by men. आम इंसान जो हम लोग बातें करते हैं, तो ज़्यादातर रोमांटिक पोइट्री आप देखें तो सब आम से बातें हो रही है. एक शख्स नेचर को डिस्कस कर रहा है, एक शख्स रेवर की ब्यूटी को डिस्कस कर रहा है, एक हेल्थ की, एक ग्रीनरी की, ठीक है, इसको डिस्कस कर रहा है, गाँव को डिस्कस कर रहा है. सब चीज़ें लैंग्वेज ऑफ रोमांटिक पोइट्री. सैम्पल एक्सप्रेशंस, सैम्पल एक्सप्रेशन आर देयर, बिल्कुल सैम्पल लैंग्वेज इस्तेमाल किया है रोमांटिक पोइट्स ने. एंड अनदर थिंग इज language of low classes, especially for people, the middle class are discussed in the romantic poetry.